In this video we are going to look at liver anatomy and blood supply. Liver is the largest internal organ in our body. It lies in close proximity to other organs, such as the gallbladder, which is under it, and the stomach, which is the left of the liver, is about 1.2 to 1.6 kilograms in healthy adults. It is located in the right side of the body under the lower ribs. The liver can be seen as through it's made up of two major lobes, but it's actually four lobes of unequal size, the organs that are in close proximity to the liver is a gallbladder, which actually connects with liver. With the bile duct comes from the liver, and the gallbladder, and the cystic duct coming from the liver. And these are important in the bile system. Liver actually has a lot of blood supply in order to be oxygenated and in order to receive nutrients. So if we look at the liver blood supply, here we have the artery, the aorta, coming from the heart, which brings oxygenated blood into tissues. So here there are these capillaries of general circulations, where the tissues will use up the oxygen. And now this blood supply will be deoxygenated. It will be low in oxygen concentration, and thus the oxygenated blood supply will go back to the heart through the inferior vena cava. Now the organs found on the bottom half of our body are the liver, stomach, spleen, and also intestines. The aorta coming from the heart gives oxygenated blood to all these organs. The liver, stomach, and the intestines. The artery going into the liver is known as hepatic artery, and this gives the liver oxygenated blood. It gives the liver oxygen to function. The artery giving oxygen to intestines is known as the mesenteric artery. The spleen, stomach, and intestine has used the oxygen from the blood supply. The blood supply will be deoxygenated. The spleen, stomach, and intestines has used the oxygen from the blood supply. The blood supply will be deoxygenated, and this deoxygenated blood supply will be veins. And actually this vein will not go back to the heart. It will go towards the liver as a bit vein known as the portal vein. And these veins carry nutrients from the stomach, spleen, and intestines. And that is how the liver receives nutrients. The hepatic artery and the portal vein, one of them bringing oxygen, and the other bringing in nutrients in the liver. Once it's used all these oxygen and nutrients, it will be another vein leaving the liver, known as hepatic vein, which connects to the inferior vena cava, which then goes back to the heart. So here we have the liver. The aorta brings in oxygenated blood to deliver through the left and right hepatic artery. So again, this is oxygen-rich blood from the heart, and this only supplies about 25% of the blood supply to the liver. And then we have the vein leaving the liver towards the heart, and this is the right hepatic vein, left middle hepatic vein, and left hepatic vein, which connects to the inferior vena cava, which then goes back to the heart. And then the portal vein, which brings in nutrients, and this comes from the intestines, and this is about 75% of the blood supply going to the liver, so it's much more than the oxygen supply from the hepatic artery. So the portal vein brings in nutrients from the intestines, spleen, and the stomach. The gallbladder, which connects to the liver, this store bile for the secretion, and many bile ducts within the liver. Now let's have a look at how the hepatic cells are organized within the liver, and how the blood supply with oxygen coming in portal vein, nutrients coming in hepatic vein leaving the liver, all connects together and coincide within this organized structure. Well, the liver is over-organized in a hexagonal sort of shape known as lobule. So each lobule here contains many types of hepatic cells. Liver cells in the center of the lobule. The central vein, which essentially connects to the hepatic vein, which leaves the liver towards the heart. Hepatic vein is a liver sinusoids, and they run from the central vein into the portal trades, so they connect with portal trades. What is the portal trade? Well, the portal trades consists of three things: the portal vein, bile duct, and the hepatic artery. And all these veins connects with each other, and these veins connects with central vein. And this is how liver receives its oxygen, receives its nutrients, and how it sends out bile from liver into the bile duct. So this is known as trade. It's also important to know that the liver contains special macrophages, hepatic macrophages, known as Kupffer cells. Hepatic vein, essentially the central vein here with the sinusoids, which remember connects to the portal trade. And the portal trades, here the bile duct, the branch of the portal vein, and a branch of a hepatic artery. So bile duct, portal vein, hepatic artery, and surrounding all these sinusoids, and all just everywhere the hepatic cells, known as hepatocytes. And so whatever comes through the portal vein and from the hepatic artery can be given into these hepatocytes, and then will be emptied out into the hepatic vein, which will then enter the heart. Similarly, cells which produce bile can then bring it to the bile duct, which then goes into the gallbladder. Macrophages known as Kupffer cells, and these are important in the immune system. Last, the organization inside the liver are hexagonal shaped.
Lobules with the central vein being in the middle. The central vein can be also referred to as a hepatic vein because it essentially goes back towards the heart. And then surrounding each corner of the hexagon we have the portal trades. What the portal trades? They are the portal vein, the hepatic artery, and the bile duct, and they connect essentially to the central vein. And with this connection the portal vein can give nutrients to the hepatocytes. And the hepatic artery can give oxygen to the hepatocytes as well around here. लिगामेंट ऑफ लिवर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। काफ़ी टाइम स्टूडेंट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेता है लिवर का, उसे याद भी हो जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअली में लिगामेंट कितने लिगामेंट है और कौन सा लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो सब फर्स्ट इज फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम इज प्रेजेंट इन एंटीरियर साइड ऑफ द लिवर। तो दिस इज एंटीरियर साइड ऑफ लिवर। यहाँ पे जो मिडिल में जो आपको वाइटिश जो स्ट्रिप दिख रही है दैट इज कॉल्ड फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम। और मैंने बताया था लिगामेंट क्या होते हैं, दैट इज अ पेरिटोनियम फोल्ड। ओके, एंड जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो एक्सटेंड करेगा नीचे की तरफ, और आपको जो हैंगिंग पार्ट दिखेगा ना दैट इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर या लिगामेंटम टेरिस। ओके, ये लिगामेंटम टेरिस जो होता है वो जो अम्बेलिकल वेन होती है बच्चों में बर्थ के टाइम, उसका रेमिनेंट होता है। ठीक है, एंड द राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो व्हाट इज एक्चुअली, मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप सुपीरियरली देखेंगे, मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ये सुपीरियर व्यू हम देख रहे हैं लिवर का। इसको अगर इसको हम ऊपर ये वाला व्यू देखें ऊपर वाला, तो हमको ये व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है। कॉर्नियल लिगामेंटम और ट्रायंगुलर लिगामेंट को समझने वाला पार्ट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट स्ट्रिप ऊपर की तरफ, दैट इज कॉर्नरी लिगामेंटम। ठीक है, आपको ये इसको कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज कॉर्नरी लिगामेंटम। ठीक है, जो पीछे की तरफ जाएगा तो वो लिगामेंटम वेनोसम बनाएगा, और जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो ये बनाते हैं लिगामेंटम वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम। ठीक है, याद रहेगा ना, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जाएगा तो लिगामेंटम वेनोसम, और एंटीरियरली जाएगा तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम। ठीक है, और जो सुपीरियर है, सुपीरियर ये कॉर्नरी लिगामेंटम हुआ, कॉर्नरी लिगामेंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद अब जब ये कॉर्नरी लिगामेंटम लेफ्ट साइड जाएगा तो ये लेफ्ट साइड जाके इसको बोलेंगे लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंटम। ठीक है, अब और बस आप इसमें बहुत इजी है, कॉर्नरी लिगामेंटम लेफ्ट साइड गया तो यहाँ उसको लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंटम बोल दिया। लेकिन राइट साइड में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, राइट साइड में कंफ्यूजिंग क्या है कि जब ये कॉर्नरी लिगामेंटम राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। एक तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो सुपीरियर रहेगा इसको बोलेंगे हम सुपीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम। ठीक है, और एक जो लिगामेंट का पार्ट रहेगा ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो, उसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, उसको बोलेंगे इन्फीरियर कॉर्नरी लिगामेंट। फिर ये जब दोनों मिल जाएंगे तो तब वहाँ पे हम बोलेंगे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। आपको एक किसी डायग्राम में मैं दिखाती हूँ। हाँ, या नहीं, इस डायग्राम में भी आपको नहीं देखने, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए, दिस इज सुपीरियरली जा रहा है सुपीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम। ठीक है, इन्फीरियरली इधर से आ रहा है इन्फीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम। इन्फीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम जब भी दोनों मिल जाते हैं तो दिस इज राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। मैंने आपको यहाँ पे कोशिश भी की डायग्राम से बताने की। तो देखिए, ये इतना पार्ट जो है वो कॉर्नरी लिगामेंटम है। फिर जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाएगा। जब ये कॉर्नरी लिगामेंट राइट साइड आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सुपीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम और इंफीरियर कॉर्नरी लिगामेंटम। फिर
ये दोबारा जब मिलेगा तो इसे बोलेंगे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये जब इंटीरियर साइड में जाते थे इसे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, और उसका प्रोजेक्शन पार्ट होता है उसे लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, और यही लिगामेंट पीछे जो पोस्टीरियर सरफेस पे आता है उसे लिगामेंटम टेनोसम बोलते हैं। तो ईजी है। अब एक बार बस रिवाइज करें, डायग्राम्स को देखें, इमेजिन करें, आपको समझ आ जाएगा। टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है और बहुत इजी है। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो उसको, तो आपको पता है कि पोटापेटिस क्या होता है, पोटापेटिस में कौन सी 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपको सब पता है। बस आपको थोड़ा सा और पढ़ना है उसके बारे में। तो इट इज़ द हाइलम ऑफ द लिवर। तो हाइलम ऑफ द लिवर इसमें क्या होता है कि वो एक पार्ट, आप यहाँ देख सकते हो, वो पार्ट जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स निकले या वहाँ कोई स्ट्रक्चर अंदर जाए, मतलब या तो बाहर निकले या अंदर जाए। तो जो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेनली 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक डक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट, प्लस इसके अंदर नर्व्स और लिम्फेटिक नोड्स भी जाती हैं। आप कभी भी किसी भी ऑर्गन के हालत में पढ़ोगे तो आप उसमें आपको आर्टरीज वेन पढ़ने को मिलेंगी, और साथ में नर्व्स और लिम्फ नोड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इट इज फाउंड ऑन पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस कैसा, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस posterior surface and this is inferior surface। तो posterior और inferior के मिडिल में ये को पोटा हेपेटिस देखने को मिलेगा, इसलिए इसे posterior inferior surface पे बोला जाता है कि ये posterior inferior surface पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इट लाइज बिटवीन द क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब। मैंने आपको एक लेक्चर, जब मैंने लोब्स का लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बताया था कि ये क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में मिडिल में लाई करता है। ये आप डायग्राम में इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेट लोब, दिस इज क्वाड्रेट लोब एंड दिस इज पोटा हेपेटिस, बिटवीन क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब के, ठीक है। लेसर ओमेंटम अटैच टू इट्स मार्जिन, जिसके साइड में ही लेसर ओमेंटम एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स होगा, उसको लेसर ओमेंटम बोलते हैं, वहाँ पे ये इसका मार्जिन होता है, ठीक है। कंटेंट, इसके अंदर ये कैसे किससे रिलेटेड होता है, तो एंटीरियरली कॉलबेडर से। अभी पोटा हेपेटिस देखोगे, इस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा बाकी, लेकिन आप यहाँ से याद रख सकते हो कि इसके एंटीरियरली कॉलबेडर होता है, मीडियली हेपेटिक आर्टरी, नर्व्स और लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, और पोस्टीरियरली पोर्टल वेन होती है, ठीक है। आप गॉलब्लैडर से, आप एंटीरियर गॉलब्लैडर से ये भी मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे हेपेटिक डक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। जो देखिए हेपेटिक डक्ट है, दैट्स लाइन एंटीरियरली, तो मीडियली हेपेटिक आर्टरी, नर्व्स और लिम्फेटिक नोड्स, और पोस्टीरियरली जो है ब्लू कलर का आपको जो पाइप्स दिख रहा है, दैट्स अ पोर्टल वेन, तो वो पोस्टीरियरली। तो आपको याद रखना एंटीरियरली हेपेटिक डक्ट, देन hepatic artery and portal vein। उसको VAD से भी याद रख सकते हो आप। VAD से कैसे याद रख सकते हो आप, पीछे से पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। तो सबसे लास्ट में क्या है, पोर्टल वेन, फिर उसके बाद हेपेटिक आर्टरी और उसके बाद हेपेटिक डक्ट। तो आप इसे VAD से भी याद रख सकते हो, ठीक है। In this video, we'll be talking about the liver segments and more specifically the vascularization and the blood drainage of each one of these segments. What's important to know is the liver is subdivided into lobes, segments, lobules, and then acini. For the purpose of this video, we'll be talking about the 8 segments. Each one of these segments
has their own vascular biliary tree, which is very important because upon removal of one of these segments, the rest of the liver can remain nourished and still function properly. And each one of these segments contains a branch of the biliary duct, a branch of the portal vein, and a branch of the proper hepatic artery, and these three make the vascular biliary tree. And of course you have the central vein, which drains all of the blood into one of three hepatic veins, right, middle, or left hepatic veins. And these all drain their blood into the inferior vena cava. What's also important to know is that each one of these veins further subdivides the liver into divisions. So for example, we can see the right hepatic vein on the right side divides the right lateral division, and it also drains the blood of segments number 7, 6, and 5. All of those segments go into the right hepatic vein. The middle hepatic vein divides the right medial division, which includes segments number 8 and 5, and also drains blood from segment number 4. You can see now the left hepatic vein, which drains blood from segments number 4, 2, and 3, and subdivides the liver into the left medial division and to the left lateral division. So now we're going to be talking about the 8 separate segments of the liver. We can see here highlighted in blue, segment number 1, the caudate lobe. It is also part of the 4 lobes of the liver. However, it is considered a segment because it receives its own vascular biliary tree. And also one thing to mention about the caudate lobe is that it drains its blood directly into the inferior vena cava. You can see here segment number 2, the left posterolateral segment. It is part of the left lateral division of the liver, which includes segments number 2 and 3, and both of these segments drain their blood into the left hepatic vein. And one thing to mention about that left hepatic vein, it is the division between the left lateral division of the liver and the left medial division of the liver. And I've also highlighted here the middle hepatic vein, which divides the liver into the right and left hemilivers, which we will see later on. Segment number 3, again, also part of the left lateral division, and together with segment number 2, it drains its blood into the left hepatic vein. Moving on to an anterior view of the liver, we can see segments number 4A and 4B, which is part of the left medial division. And again, that middle hepatic vein is making this division of the liver. And also segments 4A and 4B drain their blood into the middle hepatic vein. And highlighted below it is segment 4B. It has the same venous drainage, but one thing to mention is that it includes the quadrate lobe on its visceral surface. Now moving on to segment number 5, we can see here it is part of the right medial division of the liver, which includes segment number 5 and segment number 8. And again, that middle hepatic vein separating the right and left hemiliver, with the right hemiliver consisting of segments number 5, 6, 7, and 8. And the right medial division, again, consisting of segment number 5 and segment number 8. Now we can see a more lateral view of the liver exposing segments number 6 and 7, which is part of the right lateral division. And both of these segments drain their blood into the right hepatic vein. And the right hepatic vein, again, is the border between the right lateral division and the right medial division. And here we can see segment number 7. Again, both segment number 7 and number 6 drain their blood into the right hepatic vein. And now highlighted the last one, segment number 8, we can appreciate all of these segments being drawn on, and again that very important middle hepatic vein, which is the border between the right and left hemiliver.